इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी हमने डिस्कस किया था गर्ल्स. इलेक्ट्रिसिटी मीन द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. मैग्नेटिज्म मीन गर्ल्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the properties and behavior of magnet is known as magnetism. ओके, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में गर्ल्स हमने एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम हमने डिस्कस किया था. ओके, रिलेटिविटी गर्ल्स, रिलेटिविटी जो है वो दैट इज अ थ्योरी विच वाज प्रपोज बाय आइंस्टाइन. ओके, विच इज रिलेटेड विद द मूविंग ऑब्जेक्ट and gravitation. Okay, quantum physics which deal with the discrete and indivisible unit of energy is known as quanta. Okay, particle physics girls, in particle physics we discuss about those particles physics beside the elementary particles some other particles are also present in atom such as lepton, quark, boson, photon. Okay, positron, these are the other particles of atom. Okay, cosmology हमने discuss किया था girls. Cosmology which is related with the origin, evolution and eventual fate of universe. Okay, astro, the word astro means star, which is related with the study of stars, galaxies and black hole. Okay, biophysics and medical physics भी हमने discuss किया था girls. Okay, सो गर्ल्स काइंडली हर एक चीज़ को बहुत डिटेल से रीड आउट करें. ओके, फिर गर्ल्स हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ डिस्कस किए थे. देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. वन इज़ नोन एज बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड द सेकंड वन इज़ नोन एज द डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़. Base physical quantities mean girls the minimum number of physical quantities which was selected by the group of scientists and which are only 7 in number, so that is known as the base physical quantity. Okay, derived physical quantity, as its name indicate girls, any type of physical quantity which are obtained from base physical quantity by multiplying, dividing or both, so that is known as the derived physical quantity. Okay, system international unit girls, as I told you that system international unit is a complete set of unit for all physical quantities is known as system of unit. Okay, and the short form of system international unit, the short form of this is SI unit. Okay, and girls there are 7 base physical quantities which has 7 base unit, such as the SI unit of length is meter, SI unit of mass is kilogram, SI unit of time is second. Okay, SI unit of temperature is Kelvin, SI unit of amount of substance is mole, and SI unit of luminous intensity is candela. Okay, same girls, as I told you that the derived physical quantities are infinite in number, they are unlimited in number. Okay, so each type of derived physical quantity has SI unit. Okay, the next one is standard form or scientific notation. Scientific form or standard notation, as I told you that if a value consists of maximum number of digits. Okay, so simply we can convert that number in standard notation or in scientific form. Okay, how we can convert those number in scientific form? Just by placing decimal with the power of 10. Okay, suppose a number is the distance between the earth and moon is given. Okay, and this is the value which consists of maximum number of digits. So how we can convert this value in standard form? Just by moving decimal. Okay, and in standard form girls, decimal is always placed after first non-zero digit. Okay, so new standard form is 3.84 and power of 10 depend on the number of digits present between the initial position of decimal and new position of decimal. Formula which I already discussed, that is number n is equal to mantissa multiplied by power of 10. Number n mean the number which is in simple notation. Mantissa mean the value or the number which consists of a decimal. So that is known as mantissa. And power of 10, as I told you that it depend on the number of digits present between the initial position of decimal and new position of decimal. Okay, and sign will be marked according to the rules of Lars, LARS, Lars. L mean left, A mean addition, R mean right, S mean subtraction. Okay. सो काइंडली ये सारे एग्जाम्पल असाइनमेंट भी एक बार जो है वो आप इसे सॉल्व करें, एक नज़र इसे देखें. ओके,
प्रीफिक्सेस का भी हमने डिस्कस किया था, प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10. It is a mechanism through which a very large number or a very small number is simply expressed in power of 10. Okay, by giving a proper name or by using a symbol, so that is simply known as prefix. Okay, there are prefixes, table of prefixes is given girl. Kindly table of prefixes को जो है वो लाजमी इसे रीड आउट करे, इसे लर्न करे. ओके, एग्जाम्पल असाइनमेंट को भी एक बार जो है वो प्लीज़ रीड आउट करें. फिर हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का डिस्कस किया था गर्ल्स. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मीन एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सो सिंपली दैट इज़ नोन एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. जैसे हमने लीस्ट काउंट का हमने डिस्कस किया था. लीस्ट काउंट मीन द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग डिवाइस, सो दैट इज़ नोन एज लीस्ट काउंट. मीटर रूल का हमने डिस्कस किया था. ओके, meter rule mean it is an instrument which is used for the measurement of distance between 2 points. Okay, so simply that is known as meter rule. Okay, and meter rule are made up of from different materials such as wood, plastic, metal, anything. Okay, and sizes भी इसकी vary करती हैं. कुछ मीटर रूल स्मॉल इन साइज़ होते हैं, कुछ मीटर रूल जो है वो लार्ज इन साइज़ होते हैं. स्केल्स उस पर गिवन होते हैं नॉर्मली सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में. ओके, एंड गर्ल्स 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर. 10 मिलीमीटर. वेट गर्ल्स, सॉरी, 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Okay, and suppose girls, if 1 centimeter is equal to 10 millimeter, so 10 centimeter will be equal to 100 millimeter, because 10 multiplied by 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर, जो कि ऑलरेडी मैं आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बहुत डिटेल से करवा चुकी हूँ. ओके, आप इसे फाइंड आउट भी कर सकती हैं. जैसे हम कहते हैं गर्ल्स कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ओके, सो 10 सेंटीमीटर आपके पास कितने मिलीमीटर के इक्वल होगा? दैट इज़ सपोज x, सिंपली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट, उसी तरीके से करें गर्ल्स, x मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर. x को सेपरेट करने के लिए डिवाइड 1 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड. सो 1 सेंटीमीटर कैंसिल, यूनिट सेंटीमीटर कैंसिल. So x is equal to 10 multiplied by 10 is equal to 100 मिलीमीटर. ओके, इसी तरीके से बहुत से कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हमने डिस्कस किए थे. 1 hour is equal to 60 minute. ओके, and 1 hour is equal to 3600 second. ओके, सो प्लीज़ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को भी एक नज़र रीड आउट करें. अच्छा जी, second one instrument is known as vernier caliper. Okay, vernier caliper, it is a type of device which is used to measure a fraction of smallest scale division by sliding one scale over another scale is known as vernier caliper. Okay, and girls, least count of vernier caliper is 0.1 millimeter, or in centimeter 0.1 millimeter is equal to 0.01 centimeter.